how to stay consistent daily. Now this is the biggest problem. Consistency कैसे maintain करें? Consistency के सबसे important cause या consistency को maintain करने का तरीका क्या है? वह first way is targets and schedules. Okay, so you have to make sure that you have a schedule, and you should have daily targets or monthly, weekly targets like that. So you should be dividing your entire schedule maybe for a month and into weeks and daily targets. अगर आप daily कोई target नहीं है and you are reading it randomly कि चलो आज पॉलिटी पढ़ लेते हैं, कल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, परसों कुछ और पढ़ लेंगे, so in that case you will never have that consistency because you don't know what is your goal that particular day. But when you have set up a goal and you know that this particular, in realization of this goal I will have to spend around 8 hours or 9 hours, so in that case आपका mind हमेशा उसी loop में रहता है when you set up a goal, when you have a target. But if you start reading like कि चलो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटी खत्म करनी है, पढ़ते अब जितना टाइम लगेगा लगेगा, so in that case you don't have the daily target and you are basically, your mind is not working in any kind of constraint. Your mind is like free, आप कुछ भी कर लो, आज ठीक है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आप कुछ कर रहे हो, थोड़ा टाइम इधर उधर दे रहे हो, you will never be focused. So ensure that कि you should have daily target and schedule. Second, in order to ensure that you follow this daily target and schedule, you should have some mechanism of incentivization also. आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड भी दो. दैट मीन्स सपोज आपने कुछ डेली टारगेट रखा एंड अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो यू कैन गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड कि अगर मैंने एक वीक तक अपना शेड्यूल कंप्लीट कर लिया तो आई विल ट्रीट माई सेल्फ विथ बिरयानी और आई विल ट्रीट माई सेल्फ विथ पिज्जा और आई विल बेसिकली टेक दिस संडे ऑफ इफ आई एम एबल टू फिनिश द शेड्यूल. संडे का ऑफ लूंगा एंड आई विल गो एंड वॉच अ मूवी, आई विल गो एंड वॉच ए सीरीज. मैं पूरे दिन कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा एंड दैट इज एन अर्नड गिफ्ट, दैट इज एन इंसेंटिवाइजेशन. कि अगर आप कुछ इंसेंटिवाइज कर रहे हो अपने आप को तो यू विल फील प्राउड, यू विल नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ गिल्ट, क्योंकि वो आपने खुद को अवॉर्ड किया है कि मैंने ये टारगेट रखा था 6 दिन का, मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है एंड दैट्स व्हाई आई हैव अर्नड अ गिफ्ट. सो आपको गिल्ट नहीं आती है कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं खेल रहा हूँ, बिकॉज this is something that you promised yourself that you will read 6 days consistently and 7th day you will take it for a break. So that is incentivization होना चाहिए आपको. Okay, and that is connected with your target and schedule. Normally क्या है, टारगेट शेड्यूल नहीं है तो आप क्या होता है, पॉलिटी पढ़ने बैठे हो लेकिन क्या हुआ कि मोबाइल देखने बैठ गए, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी आ रही थी या सीरीज है तो आपने पूरा दिन वेस्ट कर लिया नेटफ्लिक्स की मूवी. आप पूरे दिन रात में गिल्ट में सो गए, यार आज तो मुझे पढ़ना था लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स की मूवीज या सीरीज देख रहा था. Okay, but if you have basically linking your incentivization with this thing, you will be consistent, you will be motivated कि I want to watch the movie on Sunday and that's why I need to follow the schedule regularly. So that is the two things that you should keep in mind in order to be consistent.